places and they were also shocked at the right places, so they must have enjoyed it. आप लोग of course please अपने questions ready रखें, मैं थोड़ी सी बात इनसे करती हूँ and then I'll invite the audience to ask questions as well, because I think this is an opportunity for them for you to talk to him directly. But sort of there were one or two or three things that struck me. One is of course the paranoia, that we all felt during these past 2 years, whether it was COVID or Salah, whether it's Pakistani passport, that whole sense that we lived through such a paranoid time. How did that change you as an artist? So, okay, well, let me first introduce this film so you would know that what is this film, how it came into existence and what is the film. तो देखिए ऐसा है, मैं जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहा. आई एम नॉट अ लोनर बाय नेचर. मैं बहुत घूमता हूँ, लेकिन मैं अकेला कभी नहीं घूमता. There has to be a friend, there has to be a colleague, there has to be somebody with whom I can, share the experience. So as a matter of fact, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को बताने के लिए. लॉकडाउन हुआ था, जब फाइनल लॉकडाउन शुरू हुआ था in 2020, that was March 24th. I was in the most beautiful spot at that time. I was in a place called कोठी. मैं अपने दिल्ली के एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा था और मैंने कहा था कि सदार है मेरा दोस्त. मैंने कहा सदार, गाड़ी चला, जहां पर रोड खत्म हो जाएगी, we are going to stay there. And we reached up to from Delhi, we reached to कोठी, और कोठी के आगे रोड बंद थी क्योंकि बर्फ थी वहाँ. और तब तक लॉकडाउन का फियर शुरू हो गया. एंड तो मेरा दोस्त बहुत परेशान हुआ और वो बार बार मुझे कह रहा था कि यार सौरभ वापस चलते हैं, और मुझे थोड़ा अंदाजा था कि कुछ बंद होने वाला. तो वो जगह मैंने देखी कि सामने हिमालय, पूरा शहर खाली हो गया. छोटा सा शहर है, शहर का टाउनशिप है, और सारे होटल्स खाली थे. एक होटल में कुछ उसके केयर टेकर्स थे, तो उन्होंने मुझे देखा और पहचान लिया. तो मैंने कहा यार पहचानना ठीक है, लेकिन मुझे रखोगे तो बात करो. तो उन्होंने एक कमरा दिया. द होल होटल वाज फॉर 2 of us. So the whole big restaurant was just 2 of us. We rearranged it, we did the lighting, and we took out the bottles and booze and everything, and it became a private property. और सामने हिमालयस. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सदार, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है लॉकडाउन के लिए यार. लॉकडाउन हो जाएगा, हो जाए, चलो. वैसे भी तो क्या होता है, आप कहीं जाते हैं, आपका मन करता है, लेकिन फिर आपको याद आता है कि यार मुझे एडिटिंग करनी है या बनाने की शूटिंग करनी है. यू हैव टू कम बैक. आई सेड दिस इज माय फोर्स, वी विल बी हियर एंड इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल थिंग. मुझे अंदाजा नहीं था कि ये 6 महीने का लॉकडाउन होने वाला. मुझे ऐसा था कि होगा 10 दिन 15 दिन के लिए होगा. एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एडवेंचर. बट देयर इज वन थिंग. That night, after having a couple of classes, my friend said, he said, Saurabh, trust me, let's go. कोठी जो है वो हिमाचल में लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? हाँ, तो वो उसके आसपास में गाँव हैं, ऐसा है. और मैं तो बिल्कुल एकदम फॉरेनर हूँ उस जगह के लिए, क्योंकि मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ या ज़्यादा गया नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी होने के बाद भी मेरा थोड़ा एक्सोटिका चलता रहता है. तो उसने मुझे कहा कि यार जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो 3-4 गांव वाले आए और उन्होंने कहा देवी का आदेश है, होटल बंद कर. तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा है हिंदुस्तान में. वो थोड़ा एक्सोटिका रहता है ना कि आप ऐसी जगह गए तो देवी देवता मानते हैं. तो मैंने कहा हाँ यार, हिंदुस्तान में तो हर चीज को गॉड और भगवान से जोड़ लेते हैं. तो ये तो बड़े इनोसेंट लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि देवी का आदेश है भाई खाली करो. बोला ये वो तो ठीक है सौरभ, अगर हम यहाँ रुक गए और 15 दिन बाद ये गांव वाले वापस आए और उन्होंने होटल वाले को कहा कि देवी का आदेश है कि जो बाहर से आया उसकी बलि चढ़ाओ, तो क्या करें. And next morning we took the car and we ran back home.
And as we were running back, it was a great adventure for us because हम जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, पीछे borders close होते जा रहे थे. So it was almost like a Bond film, you know, that the car is driving and you are going. And एपिकलिप्टो फिल्में हमने बड़ी सारी देखी हैं. वो zombies होते हैं, पोस्ट न्यूक्लियर वॉर का जो इमेज होता है, वो सब हमने बहुत देखा है. But actually, physically, I started seeing that because you go to a restaurant and people are just hiding, and the people you are seeing are in masks, and it was bizarre. Then I came back home. And for the first time in my life, I was caged. And I realized, in 10-15 days, I realized it's not going to get over. And I'm not going to meet people. I just can't pick up a phone and say, "Arey yaar, Chaudhary sahab, kya kar rahe ho yaar, chai pilao." I can't walk on the road. There was this tremendous fear of the food will get over. You might not find food. Then everybody who was calling just wanted to talk about this COVID, you know. And मैं इतना चढ़ गया था, मेरे एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया, कहता यार मुझे मालूम है कि बड़ा ऐसा चक्कर, जो भी थेरीज लोगों को मालूम होती है वो थेरीज बताते रहते हैं. मैंने कहा यार सुन, संजीव मेरा नाम है उसका. मैंने कहा संजीव, आर यू अ डॉक्टर? He said no. I said that's too bad. You're not a doctor, to just shut up. Don't talk about it because you have no idea. We all know it. We all know because of internet and whatever we are calling, and we just want to talk about it. कोई कहता है तांबे से ठीक हो जाता है, कोई कहता है नींबू से ठीक हो जाता है. अबे चुप रहो यार, लोग कर रहे हैं. And if you're going to die, then everybody else is going to die. So you can't keep living that fear all the time. Secondly, एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूँ. इसमें काफी सारी चीजें. It also introduces me. Long time back, a friend of mine called me. Long time back, which is like 2015 or 16, ऐसा. एक रात को उसने मुझे फोन किया था, मेरे दोस्त ने. उसने कहा था कि सौरभ, you know, I realized that we just keep working. That's sad. I said, what's sad? He said, no, I mean, I realize whenever I meet you, you just keep working. Either you're talking about your work or you're engrossed in your work. So I said, so what's the problem? He said, you know, Saurabh, there are other things in life than just work. I said, like what? He said, like holidays. मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, I'm on a perpetual holiday from last 35 years. When I go to my work, my holiday begins. I don't need it. You do not like your work, you need a holiday. You look for it. I will. Having said that, this lockdown was a new situation. It was not letting me work. And I write. But writing is a very strange girlfriend. You know, it behaves erratically. राइटिंग आप केओस में तो बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब आपको एकदम शांति और लॉकडाउन दे दिया जाता है तो आपका राइटिंग बंद हो जाता है. यू कांट फोर्स इट. द आइडिया जस्ट डजंट कम इन योर माइंड. Everything seems wrong. It is uninspiring because you know that there is no outlet. So it was bizarre. मैंने जिंदगी में थोड़े बहुत पैसे कमाए और अय्याशी करने के लिए मैंने कई बार सोचा. अय्याशी या तो आप विदेश में जाके कर सकते हैं, बिजनेस क्लास में घूम के कर सकते हैं, मर्सिडीज या BMW इस तरह की कारें लेके कर सकते हैं. तो मेरे पास एक बार पैसे इकट्ठे हो गए. तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी विदेशी गाड़ी लेते हैं. मैं लेने गया, मुझे प्राइस नहीं समझ में, तो मैंने इंडियन कार ले ली, महिंद्रा की XUV 500 ले ली. पैसे बहुत सारे बच गए. मैंने कहा क्या करूं इसका. पैसे अजीब सी चीज होती है, आपके हाथ में जब खर्च करने का आप सोच लेते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है. सो मैंने कहा यार मुझे क्या सबसे अच्छा लगा और मैं क्या करना चाहता हूँ. मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगी
और कल को हो सकता है मुझे कोई स्टूडियो सपोर्ट ना हो, कल को हो सकता है कोई प्रोड्यूसर बोले कि नहीं साहब ये कहानी नहीं समझ में आती, उस वक्त मैं क्या करना चाहूँ, मैं फिल्म बनाना चाहूँ. So I went ahead and I bought equipment. I bought the best possible cameras which were in my reach. Canon का मैंने C300 Mark II लिया, 1DX Mark II लिया, 7D लिया, मैंने Cine lenses लिए, which are expensive. For an individual, it's quite expensive. Then I went to America. Then I bought every gear. The thing is that I could never use it. My wife used it. She made 3 great documentaries and then a feature film on that. I couldn't because somehow I kept getting work in a studio. हुआ क्या? अब मैं सॉरी यार इतनी लंबी भूमिका के बाद अब मैं इस बात कर रहा हूँ. ये लॉकडाउन में मैंने कहा यार कैमरा जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि मशीन को चलाओ नहीं तो खराब हो जाएगी और मुझे आता नहीं है कैमरा चलाना. तो मैंने कहा यार क्या करूं, सफाई करते हैं. तो कैमरा निकाला. तो सफाई क्या होती है कैमरे की? आप अंदर घुस के तो सफाई कर नहीं सकते उसकी. यही होता है, उसको चलाइए, उसका लेंस जो है लाइट में रखिए, उसको थोड़ा रन करिए. तो मैंने खोला, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं चलाऊं कैसे. तो मेरे बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर दोस्त हैं, तो उनको मैंने कहा यार मैं क्या करूं. उन्होंने कहा खोल उसको, एक जगह लिखा ऑन, लिखा ऑन, चलाया. उन्होंने कहा क्या दिख रहा है? मैंने कहा फेडेड सा वाइट दिख रहा है. उसने कहा उसका अपर्चर ठीक करो, उसका शटर स्पीड ठीक करो. मैंने कहा कैसे करूं? तो सारी चीजें लोगों ने मुझे बताई. When I opened it first day, it was I still remember, it was a 28 mm lens. Cine lens, CP2, Carl Zeiss का lens है, and I loved it. The lens was amazing, and I kept it at one place. I said, "Oh, this looks like film." And then I switched off a light, then switched on a light, and suddenly the whole image became very beautiful. I said, "Oh, ये तो बहुत ही अच्छा है यार." तो मैंने उसको ऑन किया तो रिकॉर्ड कर रहा था. मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहा है तो स्टिल रिकॉर्ड कर रहा है, मैं कुछ कर देते हैं सामने. So I just sat and I started blabbering, and that is one of the shots which you see that he's sitting. Achha, you must have noticed this is a completely unstructured film. I had no idea what I'm doing. So when I was sitting, I was also saying things, and that's why the dialogue delivery is not crisp. It's बीच में कुछ ऐसे करके कुछ एक थॉट आता है, फिर आप उस पर चले जाते हैं. फिर तो वो मैंने ऐसा पहले दिन शूट किया, 5-7 मिनट शूट किया, and I got excited. I got a reason to wake up next morning because then I wanted to see it on the edit. I also have edited suite for myself, and I edit. So then I went there and I said, "Oh, this works." तो फिर मुझे लगा मैं कैसी डायरी बना लेता हूँ कि जो भी लॉकडाउन में हो रहा है, whatever feeling and people write diaries, I'll write it visually, I'll do it. But फितरत से मैं उस तरह का राइटर हूँ. मैं ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर मुझे लगा कि अभी यार तुम अपनी बकवास किए जा रहे हो, अपना टुकड़ा रोए जा रहे हो. ये किस तरह की डायरी है यार? क्या मतलब है? हर कोई तो जा रहा है इससे. तो मैंने कहा चाहे ऐसे में कोई पीछे चिल्ला पड़े तो रात के वक्त अकेला आदमी हो तो कैसा होगा. So that's why that shot came. That he stopped. Things started happening, and I became like a child. I shot this film for 3.5 months, and I did not tell it to my wife. We are only 2 at home. I did not tell it to her for 4.5 months. So what did you think you were doing? I'll tell you. So we have 2 flats. Downstairs we live, and first floor is our study, office, whatever. So we were the lucky ones actually.
जो सुबह उठ के मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को बोलते थे कि अच्छा सुनो मैं ऑफिस जाऊँ। लॉकडाउन में हम एक दूसरे को बोलते थे और एक फ्लाइट आप हम लोग कहते हैं उनका भी कमरा है वहाँ पर, तो हम लोग ज्यादातर साथ होते थे। लेकिन फिर उन्हें लंच बनाना होता था, तो जब वो लंच बनाने जाती थी मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ और मैं 45 मिनट था। उस 45 मिनट में मैं कैमरा निकालता था, सेट करता था, फोकस करता था, कुछ एक लाइट करता था, एक फ्रेम बनाता था और कुछ बोल के करके कैमरा पैक करके वापस नीचे आके लंच करता था। बस हमने सरकारों के साथ नहीं किया, हमने अपने घर पे किया। Secondly, my wife usually used to that time used to after 5 o'clock she used to go downstairs, prepare dinner and everything, and मैं कुछ 9:30-10 बजे मिलता था. That was me time. I could watch films, I could write, I could do whatever. And we have this understanding कि भैया हमारा भी एक पर्सनल टाइम होना चाहिए. So मैं उसमें बहुत शूट करता था. That's why the night is very prominent in this film. That's how the night shoots happen. And I was doing it and I was thinking, for 2.5 months I didn't tell her because there was nothing presentable. Then I thought कि अगर कुछ presentable बन जाएगा तब मैं उनको दिखाऊंगा और फिर at least I'll have one audience. After 2.5 months सब कुछ करने के बाद मैंने थोड़ा पूरी फिल्म नहीं हुई. There's only one shot in this film which is shot by her, which I couldn't shoot, and that's a pan shot. Because you can't pan when you're sitting in front of the camera. The camera is not going to pan itself. So if you will see, the film does not have movement. It has static blocks. So then one day I told her, I said, I need a swish back. So I need the camera goes from here to here and then another swish back so that I can cut it. It will look like one shot. So I have to be present in both. That is the only shot she shot. When she saw it, it was completely an unstructured thing, and तब तो कुछ बहुत सारी चीजें अजीब सी थी उसके अंदर, but she loved it. She has good taste. Yes, of course she has, and she said that something, you'll never be able to make this film ever again if you don't complete it now, because this is a film where nobody was telling me what to do. Nobody was influencing me. Nobody was saying to me, and it's a pure joy. I don't know आप लोगों से कितने लोग फिल्मों में इंटरेस्ट हैं. It's a pure joy कि आपने कुछ किया and you realize it's a mistake or it's not good. So forget it. The next morning you say, अच्छा उसने वो चीज़ लोग करने की ये नहीं करनी. Let's shoot that one. तो फिर आपने वो शूट, फिर आपने कुछ एडिट किया, आगे बढ़े, फिर आप वापस आए, फिर आपने कहा नहीं अच्छा ठीक है मैं दोबारा से करूँ. So it's like what freedom a writer has till he's writing the novel, that you can constantly go back, write, and nobody is influencing your thought process, which is very pure and which is. For an artist, it's a great thing. I don't know for the market or for the audience, whatever it is, but for an artist, it's a one-time chance. So this is what is the whole story of. वो हाथ suggested है कि भाई काटे हुए या पता नहीं कुछ देखता है. एक चीज और है, आपको जो समझ में आया वही है वो हाथ, वही है वो चीजें. मैं कुछ समझा नहीं सकता इसमें, क्योंकि this is what I like about this film, that in question answers if you are going to ask me that how did that happen, sorry, you understand it, it's not my film, it's your film, you have watched it, if you want to think about it, you think about it, you think. So जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बचपन में मैंने एक कार्टून देखा था, 4 उसमें ब्लॉक बने हुए थे कि एक आर्टिस्ट है और ऐसे करके बड़ा सा स्टोन लेके वर्कर्स आते हैं और उसको रखते हैं और फिर वो ऐसे एक तरफ खड़ा होकर देखता रहता है कि क्या करूं इसका, सोचता है, फिर दूसरी तरफ से देखता है,
दिखता है कि मैं क्या करूं इसका। तीसरे में दिखाया है कि आर्ट एग्जीबिशन में वो स्टोन वैसे का वैसे ही पड़ा है, लोग सोच रहे हैं। But इसमें काम तो आपने किया है बहुत। There's so much wit also. Now, मतलब you're laughing at the world, but you're also commenting on the world. क्योंकि Angulimal is actually COVID. It doesn't distinguish between, as you say, caste, class. Correct. But we've seen all this. Yeah, you got that. Yeah, and I thought the way you said it to that publisher, oh, Angulimal, that is quite a swipe at the sort of publishing kind of industry that we are faced with. So it is not intentional. But yes, it's there. It's there because writing make exercise which is a very interesting exercise. That you sit down with a pen and paper, and the first word or the first sentence which comes to your mind, let's say the seed of lemon. ये आपके दिमाग में. The exercise is that you start writing. The condition is that you will not pick up the pen. You will just keep writing. You will not think, not pause. You will just write, and write. It's a 1 minute exercise. You write for 1 minute, 1.5 minutes, whatever, and then you just leave it. You leave it, don't read it immediately. Leave it, read it after some time. You will realize that you have written things which your mind will not allow to come out. It's a subconscious which comes in play. You know, the film is similar to that exercise. So what has happened, it is not intentionally I look down upon something or I looked up to something, but I'm a human being. So my subconscious keeps reacting. So I laugh at things, then I make comments on things, and they are not structured. Otherwise, in a script, I will structure it, which I can do smartly and I can make it more witty and more safe. Here, it is unsafe, raw, everything. So I think that that's another thing, that it reveals myself. So in any case, every work of yours is revealing personal you. and political. Correct. So you get that sense here beautifully in all the objects that create paranoia. Yeah. Whether it's Salar or whether it's COVID. Absolutely. You're saying so much about the world we are living in right now. Absolutely. This is again subconscious. Yeah. It's strange. I don't know. By choice, we have started living in paranoia. Yeah. Everything is paranoia. We were stressed always. वो बचपन से ही हमें स्ट्रेस दिया जाता है कि बड़े होके जब कमाने पे आओगे तब ये होगा, है ना, ये गलत है, वो गलत है. कल्चर को लेके आपको पैरानोया दिया जाता है, रिलीजन को लेके दिया जाता है, पॉलिटिक्स को लेके दिया जाता है. That's a fear. It's fear factor. So all the time we are, and it came in forefront during the lockdown. Right. So अगर आप किसी से, अभी हम लोग relaxed हो गए, and we have this great ability to adapt And forget. बड़े से बड़ा हो जाए, half of the earth is destroyed and it just becomes a half-cut circle. You will still forget it if you can think. We have that ability. But when we were living that, it was really, really a dreadful time. A really dreadful time. And then how we started reacting to things. Deaths became common, for God's sake. You know, death doesn't shock you anymore. It has already stopped shocking us. We are pretty adjusted with deaths. And it has been happening over a period of time. मुझे याद है मैं छोटा बच्चा था, एक घटना हुई थी, रंगा बिल्ला का एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ. संजय गीता चोपड़ा. I don't know. इनको नहीं पता होगा. Please बता दीजिए. You can't believe. It was a terrible time.
We couldn't sleep for days. It was in today's time, you will say, being there, done that type of thing, seen all. It was rape of a young girl and murder of that girl and the brother by two criminals, Ranga Billa. They are nothing. They seem like saints. What we have been exposed to today, that the way things are, the way the information has come to us. I mean, of course, I'm a human being. I can't live constantly crying. So I hear so many people died. Fine. फिर क्या इफेक्ट करता था आपको कि मेरा दोस्त मर गया, मेरा रिलेटिव मर गया. अभी कोविड में वो भी खत्म हो गया सेकेंड वेव के, कि हाँ भाई वो फलाने आपके भांजे चले गए. कितना रूम यार, एक भांजा गया, एक मामा गया, एक ताई गई, एक माँ गई, एक भाई गया, एक बहन गया, हो गया ना यार. मैं नहीं गया ना अभी, मैं इधर ही हूँ. सो दिस इज हाउ ह्यूमंस अडैप्ट. And this is the dryness. If you see, there's a sequence where he says, "Do you like Google?" He says, "No, it's too dry." Same is COVID. He's getting paid emotionally. So this is what it is. बिल्कुल. I just want to take you back to आपने रंगा और बिल्ला की बात करी ना. I just want to take you back to that child who heard that, because really I remember that as well. I'm probably older than you, but that changed the way we thought of society also. And उसके बाद मुझे I still remember our parents telling us ये नहीं करो, वो नहीं करो. देखा नहीं आप तो आपने Sanjay और Geeta को क्या हुआ? It was a life-changing moment. Absolutely, it was a life-changing moment. When I heard it, I think it was for the first time I heard it crying at such a magnitude. And तब तो इतना tabloid journalism भी नहीं था, इतने television channels नहीं था. Nobody would come on screen and tell you recreate that murder or whatever, but it was still so so vivid in our imagination. And you must have felt it much stronger than me because you're a female. Exactly. And me. Yeah. That goes without this thing. Another thing we must understand, that when I heard that, I was really shocked. I mean, the way our generation माने मैं हम सब एक ही जनरेशन को मान के चल रहा हूँ मैं. हालांकि आप लोग कह सकते हैं कि भाई हम आपके बाद की जनरेशन के हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि the way this pandemic has hit us, it is a new experience for us. ये 3 बार और हो जाए ना, उसके बाद किसी को नहीं लगने वाला. अच्छा पेंडेमिक आ रहा है, कौन सा वाला है, किस कलर का है, किस ग्रेड का है, किस मॉडल का है, किस वेरिएंट का है. It's like a new car. It's like a new Apple. It's coming in September. Exactly. So we'll be queuing up outside the shop to take booster shots. Correct. And I'm not commenting on anything, but see the way things we are exposed to through media, journalism, whatever. Everybody wants to sell spice, right? So अभी तो स्पाइसी ज्यादा हो गया है. आलू गोभी तो मिलता नहीं है उसके अंदर, स्पाइस की सब्जी होती है, मसाले की सब्जी होती है. करेक्ट. एंड मसाला जो होता है वो मसाला ही होता है, वो ऊपर से डाला जाता है, यानी कि उसमें फैक्ट और ट्रूथ की जगह बहुत कम होती है. तो जब मुझे ये समझ में आ जाता है, तो आई ऑल्सो स्टॉप रिएक्टिंग टू इंसिडेंट्स. सो देन इट्स लाइक इफ आई टेल यू as a storyteller, if I tell you a ghastly situation, आप कहेंगे यार ठीक है कहानी बनाता है, imagination is, it has not happened for real. So that's how we deal with this thing. नहीं ठीक है यार, इतना बोल रहे हैं, इतना होगा, है ना, हर चीज में हम लोग ये ढूंढ लेते हैं ना. जैसे till date I want to believe
It has happened for real. People have died, and my family people have died. I know friends who have died. Everybody knows. Everybody has somebody who's gone and gone. बट स्टिल हम अपने आप को समझाते रहे कि नहीं यार ऐसा नहीं है जैसा बोल रही है will survive because that was the only hope we could hold on. But Saurabh, I wanted to ask you, and please also, if any of you have questions, please raise your hand. Yeah. Saurabh, I wanted to ask you, when reality becomes so horrific, what does a storyteller do? Reality itself is so weird, so strange, so horrific. स्टोरीटेलर मतलब रियलिटी से ही लेगा, वो उसके इमेजिनेशन के बियॉन्ड चीजें हो रही हैं. What does he do? Nothing. We just feel stupid. Yeah, because अगर ये जो भी कोविड के दौरान जो भी हुआ है या हमारे आसपास जो भी हो रहा है, अगर मैं ये आपको फिल्म में दिखाता तो आप कहते हैं अबे ऐसे थोड़ी ना होता है. बिल्कुल. I mean bodies washed up kilometers away. मतलब these are all not only that, apocalyptic things. Correct. Not only that. I'll just say कि भाई इसमें तो I'm not a believer that you chant go corona go and the corona will go, but that actually happened. और बर्तन को छोड़िए, मेरा कहने का मतलब है ये अगर मैं फिल्म में रख देता, अगर एक्चुअली मैं इमेजिन कर लेता, अगर 2019 में मैंने फिल्म बनाई होती कि ऐसा पेंडेमिक आया, पहले तो आप कहते कि छोड़ो यार ऐसे पेंडेमिक क्या होता है. 2-4 पढ़े लिखे लोग जो है वो कहते कि हाँ ऐसा है. सौरभ ने भी बनाया है, उसने ज्यादा अच्छी फिल्म बनाई है, सौरभ शुक्ला ने भी दूसरी फिल्म बनाई है, लेकिन चलो ठीक है. लेकिन मैं अगर उसमें ऐसे कैरेक्टर आपको दिखाता तो आप कहते ऐसा थोड़ी ना होता यार, इतने भी लोग थोड़ी ना लोग ऐसा थोड़ी ना. बट इन रियलिटी थिंग्स we cannot say reality is more bizarre than the fiction. Exactly. What do you do? हम लोग तो हमारा इमेजिनेशन वहां तक जा ही नहीं सकता जो रियल लाइफ एक्चुअली करती है, जो एक्चुअली कैरेक्टर्स करते हैं. हम लोग तो इतना स्टडी करते हैं कि नहीं यार इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है तो ये ऐसा क्यों करेगा, ऐसा नहीं करेगा. वो सब करते हैं. तो सबसे शरीफ आदमी जो है वो सबसे ज्यादा बदमाशी भी कर लेता है आराम से जब मौका मिलता है. वो सब चीजें हो जाती है. So now as a storyteller, you probably have to take some reality. Yeah. That's why Bollywood तो आधा reality से ही ले रहे हैं. Different kinds. Please, हाँ. Identify yourself. और जल्दी से सवाल कहीं जाना है तुम्हें जल्दी, तो तुमने घड़ी देखी तो मुझे लगा कि यार मैं जल्दी से हाँ मुझे लगा वो भी. एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून. अच्छा. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम अदिति फ्रॉम BA फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज एक्टिंग डिपार्टमेंट. सर आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब बेमिसाल होते हैं, फिर चाहे वो नायक का कैरेक्टर हो, पीके का कैरेक्टर हो या रेड का कैरेक्टर हो, राजा जी की फौज. तो हाँ कल्लू मामा. सर हम अभी एक्टिंग सीख रहे हैं यहाँ पर आके, तो सर मतलब एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर का जो कि बड़े पर्दे पर काम करता है उसकी क्या गाइडेंस होगी कि हम जब भी परफॉर्म करें तो हम कैरेक्टर को कैसे समझें या कैसे उसमें घुसने की कोशिश करें या कैसे उसको और ज़्यादा निखार कर लेकर आएं. Okay, this is not a acting workshop, so I'll just quickly answer your this thing because that's a separate view altogether. Then you discuss all that. पहली बात ये कैरेक्टर में घुसना नहीं होता है ना. कैरेक्टर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, किसी भी चीज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ मच लाइफ यू हैव लेड, व्हाट्स योर वर्ल्ड व्यू, आप दुनिया को कितना जानते हैं, आपने कितने एक्सपीरियंसेस से आपको गुजरे हैं. ऑटोमेटिकली कैरेक्टर अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो एक इंसान होता है जो कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है और उसको वो रिएक्ट कर रहा है. यही होता है ना कैरेक्टर. तो सिंपल बात ये है कि लोग पूछते हैं कि साहब मैं अच्छा एक्टर कैसे बनूं. मैं कहता हूँ यार पढ़ो, देखो और लिखो. लिखोगे तभी एक्टर बनोगे, नहीं लिखोगे एक्टर नहीं बनोगे. लिखना क्यों इतना जरूरी? लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एक्टिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, इज इमेजिनेशन. सो द पार्ट imagination is the most important thing in acting.
actor has voice, body, dialogues, eyes, everything. What does the writer have? Just imagine. So practice that. Good morning, sir. Sir, I am Vaibhav from UIMS department, the Department of Journalism. And sir, आपने लॉकडाउन लगा, कोरोना हुआ, तो आपने एक फिल्म बना दी, स्क्रिप्ट लिखी इसके ऊपर. तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट में कौन सी मंजिल लिखी थी, और क्या आप डायरेक्ट हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ और था आपके सपनों में, और क्या स्ट्रगल रहा आपका, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ. बेटा तुम कौन सी ईयर में हो जर्नलिज्म के? सर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में? तुम तो अभी से किसी उसमें लग सकते हो, तुम तो तैयार हो गए हो. मेरी जिंदगी में कौन सी स्क्रिप्ट है यार, ये बैठ जाओ. तो सवाल का कंस्ट्रक्शन आपने बहुत अच्छा किया है. मैं जिंदगी वैसे ही जीता हूँ जैसे हर कोई. तो जो अगर आप अपनी जिंदगी को देखेंगे कि आप कैसे जी रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस आदमी ने जिंदगी कैसे जी होगी. उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, उसकी जर्नी हो सकता है अलग है, वो सब है, लेकिन है सब चीजें कॉमन ही है. ठीक है, तो बस यही मेरा जवाब. जोर से बोलो, और जोर से बोलो. जर्नलिज्म में बहुत जोर से बोलना पड़ता है आजकल चिल्ला कर. सर एक्टर बनना आपने बचपन से ही तय किया था या फिर बड़े होकर आप किसी तरह से बड़े? तो बचपन से ही तय किया था कि आपने एक्टर बनना है? मेरा तो बचपन अब भी चल ही रहा है. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. My name is Swarnan Diwan and I'm a media student. So my question to you is, as everybody knows, so it was a full single actor feature film. Did you feel any kind of pressure for the same? And the concept was also very unusual and unlike other short films. And as per the credit list, we all saw that you contributed a lot in different categories. So just out of curiosity, I would request you to share your experience and what other difficulties you came across the film. So first of all, you talked about the pressure. So I will not lie. Of course, there was a pressure, but it was a different kind of a pressure. My pressure was not that will it be successful, will I be able to sell it? You know, all of that was not my pressure. My pressure was, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, मैंने कुछ बहुत चंद फिल्में बनी हैं जो फीचर लेंथ की फिल्में हैं, जो कि सिंगल एक्टर में है ना. बहुत कम फिल्में, नाटक भी बहुत कम है. नॉर्मली एटलीस्ट 2 लोग होते हैं. 2 दिन मतलब सिंगल सोलो होता है, ऐसा नहीं है. आंखें करके एक फिल्म थी सलीम दसार की फिल्म. लेकिन जब भी इसको ट्राई किया गया है, it becomes very cerebral. It becomes very, मतलब under quotes, it becomes very intellectual. It becomes very philosophical, where the philosophy is in your face. I like films and I like work where the philosophy is there, but you hide it so well that you talk about very normal things, water, coke, you know, किसी भी चीज के बारे में बात करिए आप, लेकिन फिलॉसफी आप ऑडियंस खुद ड्रॉप करे rather than I throw the philosophy. This is what I personally think. So my pressure was, यार मैं ये इतनी देर होल्ड कर रहा हूँ, इसमें क्या बात करूँ. So I deliberately kept away from things which people were talking at that time. कि यार डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं यार. बट आप थोड़ा मेंशन करते हैं ना जब हॉस्पिटल जाओगे तो डेफिनेटली. हाँ, वो एक नॉर्मल कमेंट है. फकीरी का गाना, I think it's quite correct. So, but these are sublime things which you keep feeding and you keep creating some ideology, whatever that ideology is.
that was my pressure. It was completely a joyful ride for me, and I said, I'm very happy. मैं तो कह रहा हूँ ये तो फिर भी कुछ लोगों को पिक्चर पसंद आ गई तो उन्होंने फ्री में म्यूजिक कर दिया, एक ने साउंड कर दी, काफी पैसे लगते हैं साउंड करवाने में बाय द वे। मतलब मैंने थोड़े पैसे तो खर्च किए हैं। मुझे क्या था, मैंने ये रिकॉर्ड जो की थी वो प्रॉपर, आई डिडंट हैव अ रिकॉर्डिस्ट, सो इट वाज द कैमरा साउंड एंड द कैमरा साउंड कैन नेवर बी, उसमें बहुत स्क्रैची साउंड होता है। सो जब पिक्चर मैंने दिखाई तो मैंने कहा यार पैसे वैसे तो है नहीं मेरे को, बोला यार स्टूडियो के तो देने पड़ेंगे, तो मैंने कहा क्या करूं, बोला मैं क्लीन अप करूंगा लेकिन ज्यादा होगा नहीं क्लीन अप, जो सारे प्रोफेशनल है वो लोग जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो उसने कहा यार इसका काम करो, रिकॉर्ड कर लो, इसको डब कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार पता करो डबिंग, तो कहला कितनी देर की फिल्म है, कहला 32 मिनट की, ये 82 मिनट्स की फिल्म। तो उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने कहा देखो यार 12 से 15 दिन की डबिंग है, 12 से 15 दिन की डबिंग का जो होता है, और 4 घंटे की रोज डबिंग आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, फिजिकली नॉट पॉसिबल। सो 1 घंटे का जो भी चार्ज होता है 1,500 रुपये या जो भी चार्ज होता है, पता नहीं 1,500 रुपये ना 2,500, जो भी रेट होता है, व्हाटएवर इट इज। तो मैंने एक बजट बनाया, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, मैंने कहा मुझे पैकेज दे दीजिए। तो बोला नहीं सर पैकेज नहीं देंगे, बहुत छोटा सा आपका फिल्म है, 12 से 15 दिन में हो जाएगी, आप कर लीजिए, बात करते हैं। यू नो फॉर हाउ मेनी आवर्स आई डब? 52 आवर्स। And why did I dub for 52 hours? Because I was completely in love with every breath. Because लाइव साउंड का ये बड़ा कमाल होता है कि जब आप बात करते हो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें ट्रक करके एक आवाज आती है उससे, जो कि अचानक मेरे बोलते हुए स्पीड में, डबिंग में दैट्स वेरी क्लीन, यू आर इन अ वेरी क्लीन सराउंडिंग। सो तो जब बात हम लोग करते हैं तो जो सांस निकलती है, क्योंकि हम एक बार में बात कर रहे हैं, सांस निकलती है, चीजें रुकती हैं, मुंह में अचानक आपके होंठ चिपक जाते हैं, पक करके एक आवाज आती है। These sounds, आपने देखा होगा मैं लास्ट में गया था, वहाँ पीछे मैंने जाके बोला था यार प्लीज साउंड को कंप्लीट करो, बिकॉज दिस फिल्म इज नॉट कंप्लीट विदाउट साउंड। आई कांट होल्ड दिस फिल्म ऑन अ लो साउंड, यू नो, सो साउंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट आई एंडेड अप डूइंग इट फॉर 52 आवर्स। मैंने कहा ठीक है यार, हो गया। लेकिन फिर बाकी लोगों ने फ्री में काम किया, जैसे जिसने साउंड डिजाइन किया है पूरा। उसके बाद में मेरी दूसरी फिल्म की, विच इज अ कमर्शियल फिल्म व्हिच आई जस्ट कंप्लीटेड, बट वो भी है, वो क्या है? That's a new film which I have made for Applause Entertainment. It's called Jab Khuli Kitab. It features Dimple Kapadia and Pankaj Kapoor as the lead. क्या बताऊं मैं आपको, ये फिल्म ये आपने लिखी है, डायरेक्ट मैंने है, इसको प्रॉपर एक कैमरामैन ने शूट किया, इस फिल्म को तो मैंने शूट किया। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस वन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं यहाँ से जाके उसका लास्ट फेज जो है, जो फाइनल मिक्सिंग जिसको हम कहते हैं, साउंड मिक्सिंग, वो होने वाली है। देन द फिल्म विल बी रेडी एंड वेरी सून इट विल बी आउट। तो मेरा सवाल आपसे है, मेरा नाम आदर्श वत्स और मैं मीडिया स्टडीज का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज भी इंडिया में कमर्शियल मूवीज जो होती है उसको बहुत ऑडियंस जाते हैं देखने के लिए और बहुत पैसे कमाती है, पर वहीं जब बात हम सामाजिक मूवीज की करें, सोशल मूवीज की करें, तो उसको कम ऑडियंस जाते हैं देखने के लिए और वो कम पैसे कमाती है। तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानोगे, सामाजिक मूवी बनाने वाले फिल्मकारों को, फिल्मों को, या ऑडियंस को? मैं किसी को दोषी नहीं मानता, और ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। पर इंडिया में कुछ ज्यादा कमर्शियल में कुछ ज़्यादा नहीं है। और कमर्शियल ये आपके दिमाग में एक इमेज है कमर्शियल। यार दोस्त ऐसा है, सैफरॉन होता है, वो इतना ही पैदा होता है, उतना ही मिलता है। सैफरॉन को आप आलू के भाव में नहीं ले सकते, और आलू आपकी जिंदगी का भाव है, तो आप दोष नहीं दे सकते। जैसे आप सैफरॉन जो है वो तो हर चीज में डलता नहीं, बैंगन के भरते में सैफरॉन नहीं डालते, बताइए इसके लिए कौन दोषी है? ऐसा तो नहीं डलता बैंगन के भरते में, आलू डल सकता। तो वही सर, कमर्शियल मूवीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, सोशल मूवीज भी इंपॉर्टेंट दोनों ही है भैया।
सेफ्रॉन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आलू इम्पोर्टेंट है। तो सब चीजें इम्पोर्टेंट है, सब चीजों की अपनी जगह है, इसमें कोई किसी का झगड़ा नहीं है भाई। जिसको जो समझ में आता है, जिसका जो मन करता है। मैं भी पिक्चर देखने जाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि यार आज मेरा मूड अच्छा है, मैं एक हंसी मजाक की फिल्म देखना चाहता हूँ, है ना, या मैं एक्शन फिल्म देखना चाहता हूँ। So everybody has a right. Last two questions, then we close. Yeah. अच्छे से पूछ लो यार कोई। हाँ, हाँ, बोलिए। जोर से बोलिए। हाँ। बोलो बोलो। Hello. Yeah, good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Tanya Mittal, and I'm a student of Masters in Journalism Mass Communication. So my question to you is कि अभी हमने मूवी देखी आपकी about lockdown and loneliness. So अभी आपका क्या point of view है कि हम students पे इसका क्या impact पड़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं। क्या पढ़ा है? What are your expectations? ये तो आप भी लोग जानते हैं क्या असर पड़ा है। मैं I just try and connect. I try and connect with you. So if the film you have found something, you know, on which you have laughed or felt or anything, you will understand. Loneliness जो है वो by default it's a big problem. वो है ही है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम लोग अपना लोनलीनेस अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करते हैं, है ना। कोई वो गैम्बुलार के पास जाता है। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी एज के जो मेरे कंटेम्पररीज हैं, उनको इसमें जो सबसे अच्छा पोर्शन लगता है वो मुगैम्बो लाल है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दारू खरीदी और बहुत लुटे, है ना। दारू कभी पहुंची नहीं उनके पास, पैसे और लुट गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट दे हैव बीन फूल्ड, दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड विद दैट। So that is the Last question, जल्दी से please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बोला कि एक राइटर के पास इमेजिनेशन होती है एंड एक एक्टर के पास अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अपने एक्टिंग स्किल्स होती हैं, और आपने ये भी मेंशन किया था कि कई बार एक ऐसा थॉट आता है एंड यू गो विद द फ्लो। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी इस फिल्म में कोई ऐसा सीन था जो आप डालना चाहते थे बट आपने सोचा कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना? तो मतलब मैंने सोचते वक्त ऐसा, आपका क्वेश्चन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई सीन जो मैं करना चाहता था, फिर मुझे लगा कि लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं एक सच बात आपको बताता हूँ, और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। I'm not trying to be pompous or anything. I don't think in this world anybody is more stupid than me or more brainier than me. And I genuinely follow this. So if I'm saying something which I understand, the thing is that I have to understand. I can't be lying to myself. If I understand something, I see no reason that you will not understand. You will, definitely. Thank you so much, Saurabh, and many more films and many more roles to you. It was a delight to watch this, and we look forward to your next work. Thank you. Thank you, sir.